बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Our class of numerical answers to for semester 7th for those students who are failed or who are not gave the exam of numerical analysis 2. Class will be done at 4 p.m. to 4:30 first lecture and 4:45 to 5:15 second lecture. Today we will start the subject numerical analysis 2. Numerical analysis 2. The lecture 1. There are some operators we use in the numerical analysis 2. Here E is shift operator, delta forward difference. This is backward difference operator. This known as capital delta. This known as capital delta and this known as nebula, which is used for backward difference operator. This notation we will use throughout the subject is used for central difference operator, which is known as small delta. This known as mu, average operator. Relationship operators are denoted as delta is equal to E minus 1, which is capital delta, or the second name is forward difference operator, is equal to E minus 1. E is called shift operator. Backward difference or nebula is equal to E minus shift operator inverse. Central difference operator is equal to shift operator 1 over 2 minus shift operators negative or negative 1 over 2. Mu is equal to, mu is denoted as average operators E 1 over 2 plus E negative 1 over 2 over 2. Role of shift operator. E fx is equal to fx plus h. E square fx is equal to E of fx is equal to E f x plus h. This become f x plus h, which is equal to f x plus 2h. Here we can conclude that जो पावर e के ऊपर है वो कितनी है 2, तो फार्मूला जो शिफ्ट ऑपरेटर का बनेगा वो क्या बनेगा एफ एक्स प्लस 2h। जितनी पावर इधर शिफ्ट ऑपरेटर की 2 है तो यहाँ पे भी 2, यह है एफ एक्स प्लस 2h। ऐसे हम चलते जाएंगे। ई स्क्वायर का ई क्यूब है, तो ये हमारे पास
कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस 3h। ऐसे ही E4 कर लें तो ये कितना बन जाएगा एफ एक्स प्लस 4h अप टू सो ऑन। दिस इज द रोल ऑफ शिफ्ट पुट। ऐसे ये नोट्स पे लिखा हुआ है ई पार नेगेटिव ई पार एन एफ एक्स। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच, और ई पार नेगेटिव एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एन एच। नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। This is equal to E fx as we study earlier minus fx। fx कॉमन आ जाता है तो रह क्या जाता है हमारे पास E माइनस 1। डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया fx और fx कैंसिल हो जाती है, रह कितना जाता है E डेल्टा इज इक्वल टू E माइनस 1। अब आ जाती है बात फॉरवर्ड डिफरेंस सेपरेटर। तो ये क्या है एफ एक्स माइनस एच। दिस फार्मूला वी हैव स्टडीड अर्लियर। ये किसका फार्मूला है अगर एफ एक्स प्लस एच हो तो ई प्लस 1 एफ एक्स का। अब ये हमारे पास है एफ एक्स माइनस एच, ये फार्मूला बन जाता है ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है ई माइनस ई नेगेटिव 1। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया है बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस ई नेगेटिव 1। नाउ वी विल मूव टू सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच ओवर 2। तो ये फार्मूला जो है अगर हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर पे लगाते हैं तो यहाँ पे 1/2 साथ आपको कितना आ जाता है एच। ये फार्मूला क्या बन गया ई हाफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे ये अगर शिफ्ट ऑपरेटर इसका बनाते हैं तो ये क्या बन जाएगा ई नेगेटिव 1/2 एफ ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है ये बन गया सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई और 1/2 माइनस ई नेगेटिव 1/2 एफ ऑफ एक्स। सेंट्रल डिफरेंस इज इक्वल टू फार्मूला एफ एक्स और ये एफ एक्स कैंसिल हो जाते हैं तो ये बच कितना जाता है डेल्टा इज इक्वल टू ई 1/2 माइनस ई नेगेटिव 1/2। अब आ जाते हैं हम इस ऑपरेटर की तरफ म्यू एवरेज ऑपरेटर। नाउ we will move to average operator which is as fx plus h over 2 plus fx minus h over 2 over 2। ये फार्मूला जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, किसके इक्वल है कि शिफ्ट ऑपरेटर 1/2 एफ एक्स प्लस ये वाला जो है वो ई नेगेटिव 1/2 एफ एक्स ओवर 2। एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, एफ एक्स ये एफ एक्स कैंसिल हो जाते हैं तो बाकी कितना बच सकता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑपरेटर इज इक्वल टू ई 1/2 प्लस ई नेगेटिव 1/2 ओवर 2।
नाउ y k इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऑफ k। अगर हम इस पे लगाते हैं शिफ्ट ऑपरेटर ई वाई के इज इक्वल टू, बन जाता है वाई के प्लस वन। ऐसे ही अगर हम इस पे लगाते हैं बैकवर्ड तो फॉरवर्ड, तो ये क्या बन जाएगा वाई के प्लस वन माइनस वाई ऑफ के। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है बैकवर्ड डिफरेंस वाई के इज इक्वल टू वाई के, ये वाला जो है पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में, लेकिन इसके साथ के माइनस वन। ऐसे ही हम ये सेंटर डिफरेंस फार्मूला लिखते हैं वाई के प्लस माइनस वाई के माइनस वन। Now we will move to average operator y k is equal to y k plus 1 over 2 plus y k minus 1 over 2 over 2. Now, difference equation. Now we will move to the difference equation. An equation consists of an independent variable k, dependent variable yk, and one of the several difference of the dependent variable yk as delta yk, delta square yk, delta cube yk, delta nyk is called the difference equation. Now f capital delta yk is equal to f of k. Now for example, delta cube yk plus 3 delta square capital delta yk minus delta yk plus yk is equal to 3k plus 2. Now delta square yk plus 3 delta yk minus 7 delta yk minus 7 yk is equal to 0. Next definition is the order of difference equation written in the form 3 from delta dash is the difference between the highest and lowest subscript of y's. For example, this equation is the difference equation of order 2, and this is the homogeneous linear difference equation of order 2. Due to this and due to this, we can say that is a homogeneous linear equation of order 3. Now, next definition is the degree of the difference equation written in the form 3 delta dash is the highest power of y's. For example, y square k plus 1, y cube k plus 2 minus yk plus 1, yk minus y square k is equal to k is a non-homogeneous and non-linear difference equation of order 2 and degree 3. The highest is k plus 2 order 2 and the highest power is 3, and this become degree 3. Difference equations are classified into following types: homogeneous linear difference equation, non-homogeneous linear difference equation. If in the difference equation the function of independent variable 0, fk is equal to 0 in the equation this, then the equation is called homogeneous linear equation. अगर यहाँ पे 0 ना हो, कुछ और आ जाए, तो ये
आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन होमोजेनियस। इफ द डिफरेंस इक्वेशन the function of independent variable is not zero, if k is not equal to zero in this equation, then the equation is called non-homogeneous linear difference equation. Now, solution of homogeneous linear difference equation is y k plus 3 plus 6 yk plus 2 plus 11 yk plus 1 plus 6 yk is equal to 0. The given difference equation can be written as e power 3 yk plus 6 is the shift operator, e square yk plus 11 this equation, and this we can write as yk common, e cube plus 6 e square plus 11 e plus 6 is equal to 0. The auxiliary equation is e cube plus 6 e square plus 11 e plus 6 is equal to 0. By synthetic division, we can write the coefficient as we know that negative 1 have to choose for this 0. Now, as it is 1, after this 1 multiply negative 1, negative 1 5, this 5 negative 5, and 6. After this negative 6, m is equal to negative 1, and this after the one lowest, the depressed equation is m square plus 5m plus 6. The quadratic form of this equation is, there are two solutions. Here we get the answer of first is negative 2 and other is negative 3. There are three roots. M is equal to negative 1, negative 2 and negative 3. After this we can write as negative on this, negative 2, negative 3 is the required solution. Next example, we can see here, solve the difference equation. The equation is given as yk plus 2 minus 4yk plus 1 plus 4yk is equal to 0. The given difference equation can be written as e square yk. This we can, here we studied this earlier. This become e square in the shift operator. Next, this can be written in the shift operator, and also we write this in the form which is equal to 0. Yk is equal to 0. The auxiliary equation is m square minus 4m plus 4 is equal to 0. M square minus 4m plus 4 is equal to 0. After factorization, the roots comes as m is equal to 2 and again m is equal to 2. The roots are repeated. Thus, yk is equal to c1 plus c2k
2 power k is the required solution due to the repeaters. Now you can solve this example yourself. This example yourself. Yourself. Which is in the form of imaginary. Also, we check this example. Solve the difference equation. As earlier we solved the equations, we can write as the difference equation can be written as e4yk plus 4yk equal to 0. The auxiliary equation m4 plus 4 is equal to 0. m4 plus 4m square plus 4 minus 4m square is equal to 0. This becomes m square plus 2 whole square minus 2m whole square is equal to 0. M square plus 2 plus 2m. This can be written in this form. After this, by the separation of roots, we can write as m is equal to this, and other is this. This becomes negative 1 plus minus plus negative iota. This becomes 1 m is equal to 1 plus negative iota. We can write in the argument form r1 is equal to this and theta 1 is equal to this. Tan inverse 1 over negative 1, negative 1 tan inverse negative 1 is equal to negative pi over 4. Also this r2 becomes is equal to 2 1 square. Also iota coefficient 1 square is equal to 2 under root. Theta 2 is equal to tan inverse 1 over 1 is equal to pi over 4. Now write this in the form yk is equal to r1k c1 cos theta 1k plus c2 sin theta 1k. c1 c2 c3 c4 are the constants. We common this r1k, the value of this, r2k value is this. Now theta 1 and theta 2, we take common 2 under root k from whole equation, then this become the required solution. Now you have to solve this equation also yourself. Now you will solve this yourself. Also this equation as we earlier solved. Now we will start in second lecture, which will start 4:45 here. Solve the difference
difference equation. The page is 9. Now, thanks.